bags when it comes to the lecture of Srinivas sir. So, not taking much time, I would request Srinivas sir to take over the session of this NEP sensitization program. Over to you, sir. Thank you, Dr. Rafi. Uh, Thanks to. Please confirm my voice is reaching to all of you, Dr. Rafi. yes, sir. Just before that, sir, Yeah. a little brief introduction of yours. Okay. Because just a minute, because I am at home now, so that net No, is not working. no problem. Just a minute. Your website, what professor.k.srinivas.in. Yeah. It is not loading, sir. So I will share your resume in the No. meantime. It's working, Shafi. Rafi, it's No, working. it is not working. It is not working, sir. It is showing loading only, sir. Can I open from my side here from here? I think what I will do. I think I'll start sharing my screen. If you allow me. And Amul, make sir a co-host. Yeah, if you can. Is it coming fine on the screens now? Yes, sir. Yes. And if you click on my brief bio note, so yeah. Yes, Professor K. Srinivas, sir. Head of ICT Project Management of Unit of National Institute of Education Planning and Administration, NEPA, Government of India, Ministry of Education Institution in New Delhi. Professor Krish Srinivas holds a PhD degree in computer science and has been utilizing open source ICT tools and technology in teaching, learning, and student evaluation since 1990, both at graduate and postgraduate levels. His areas of interest are e-learning, blended learning, MOOC, ICT-enabled pedagogy, computer application in project management, e-governance. He has more than 30 years of teaching experience, industry and consultation experience. Professor K. Srinivas has also conducts teachers training workshop both at school education and higher education across the country for many teachers. He has written a number of articles on different aspects on university automation, e-governance, training needs, which has been published in research journals. He has also participated in a 5 international forum and presented papers on various aspects of e-governance, blended learning, online mode teaching, MOOC, etc. I think that's enough, Rafi. Dr. Yes, Rafi, yes. that's enough. Okay. Thank you. Okay. Okay. Because it's a long list. Good afternoon to all of you. Unfortunately, I could not see none of the participants. Any special reason? No, sir, they can open their cameras. No issue. I think, can you please instruct them? Everybody should open their cameras. Open cameras. Participants are requested to open the cameras. So I could able to see around 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. But the total number of participants is 49. उसमें से 11 लोगों ने 11 लोगों ने कैमरा ऑफ किया था. बाकी लोग मेरे ख्याल से लंच के लिए गए होंगे. I hope you follow what I am trying to say. Because yes, sir. This is a formal NEP orientation workshop. And Dr. Rafiq, can I add a little bit of Hindi also? Yes, sir. Yes. Yeah. No, Hindi also. Yeah. Huh? So the reason why I'm telling you, friends. Sir, I will take your leave, sir. Huh? I will take. Yeah. Please, Rafiq. Yeah, please go ahead, sir. Please go ahead. So, friends, why I'm asking you to switch on the webcams, because this is a formal online synchronous classroom, like our conventional classroom. हमारे पास भी कन्वेंशनल क्लासरूम होता है ना. कन्वेंशनल क्लासरूम में स्टूडेंट को बोलते हैं सीधा बैठो, सुनो, समझ में आ रहा है आपको, ये सारे सवाल आप पूछते ना.
ऐसा नहीं कि कोई कैमरा ऑफ करके नीचे सोने वाले को नहीं पढ़ाते ना हम लोग, यहां भी नहीं पढ़ाना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल हमें लेना है। तो क्यों सो जाता है, व्हाट इज टू बी डन, व्हाई डू वी गो अबाउट इट, व्हाट आर द थिंग्स टू बी लर्न, आई थिंक दैट इज व्हाट दोस टेक्निक्स हम इसमें सीखेंगे। टेक्नोलॉजी को कई लोग ये मान के चलते हैं कि नो टेक्नोलॉजी इज लाइक ए पीपीटी, टेक्नोलॉजी लाइक समथिंग, नो, थ्रू टेक्नोलॉजी आल्सो आप अपने क्लास को इनोवेटिव बना सकते हैं। यू कैन मेक योर क्लास इनोवेटिव, you can make your class creative, you can create the engaging learning experience. See, that typically we all of us are join the teaching profession by choice. Please try to understand. Okay, so when you know why we are learning all these things, not for certificate. मेरे चेहरे को याद रखिएगा, जो कैमरा ऑफ करने वाले भी, tomorrow I may come to NAC to your college, 100% I am going to ask you a question. You attended the workshop, आपने क्या सीखा है, and what is the way, what are the changes you brought into the system. और एक्चुअली टीचर्स ओरिएंटेशन है। टीचर का मतलब असिस्टेंट, एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट, प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर, सबके लिए, इंक्लूडिंग मी। सो माय पॉइंट इज दैट देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक स्किल्स, कुछ स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज हर टीचर की के लिए जरूरत है। वो कौन सा स्किल्स है, कौन सा कॉम्पिटेंसीज है, हमें सीखना है, सो दैट हमारे स्टूडेंट्स के प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज इंपैक्टफुल, एंगेजिंग, इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग फॉर द लर्नर। और एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, कई बार लोग मुझे हमेशा कहते हैं, मैं तो ये सुनना नहीं चाहता ये शब्द जो है, अरे सर हमारे ये एरिया पे ऐसा ही बच्चे हैं। नो, प्लीज डोंट सेपरेट द स्टूडेंट्स। एवरी स्टूडेंट इज अ डायमंड सर इन दिस कंट्री, every teacher is a diamond. Every student who is studying formal or informal mode of education is a diamond. हीरे है, हीरे। हर टीचर, वो स्कूली शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, वो भी हीरे है। माय पॉइंट इज दैट हीरो को ही पता है हीरो को कैसे शाइन करना है। सो प्लीज डोंट मेक द डिस्टिंक्शन। और कई बार लोग कहते हैं सर इनको मराठी बोलना नहीं आता है, क्या करने का, कुछ नहीं करने का, नहीं आता है तो नहीं आता है, जिस भाषा में तो स्टूडेंट। सो माय पॉइंट इज दैट देयर आर सर्टेन स्किल्स, वी नीड टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, नॉट द लैंग्वेज ओनली। साइन लैंग्वेज भी कई बार काम करता है। मुझे भूख, खाना, प्यास, नमस्कार, चले, साइलेंस, things are working. So when you could able to communicate through the sign language, if you are a teacher, the teacher must be a good communicator. So good communicator का मतलब मेरा ये नहीं है, when he is teaching in a conventional classroom, conventional classrooms धीरे 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 जो है कम होता जा रहा है। ओनली कन्वेंशनल मोड ऑफ टीचिंग ही काफी नहीं है। बाय 2035 राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कह रखा है 50% जीईआर हासिल करना है। हमारे सदर्न राज्यों में, इवन हमारे महाराष्ट्र में भी, एक मुंबई को छोड़ के ऑलमोस्ट महाराष्ट्र के सारे बड़े बड़े शहरों को मैं होके आया, औरंगाबाद, नासिक,
Nagpur, Bhid, almost major cities. And I have a contact, even Kolhapur recently. I was there in SGT. So my point is that, so we have different, so only conventional mode of teaching is not enough. So conventional mode of teaching say hatke. If you want to go for the non-conventional mode, like this online mode of teaching, how? हाँ सर, कोरोना काल में हमने लिया था. कोरोना काल में हमने क्या लिया था सर? अच्छा, मुझे ये बात बताइए, मेरे आवाज आप तक पहुंच पा रहे हैं? My voice is reaching to all of you. सिर्फ एक को छोड़ के किसी ने ये नहीं बताया, इससे मतलब कोई गड़बड़ है, मेरे आवाज नहीं पहुंच पा रहे. क्या राहुल सर आपके पास आने का? बाकी सबके पास मेरा आवाज नहीं ना पहुंचने का? बराबर पहुंच रहा है ना? ओके, वेरी गुड, बराबर बराबर. So my point is that only conventional mode of teaching, I think this is one of the skill we had to acquire. When teacher is saying, say yes, how to use emoji? How to use emoji? There is a facility called reactions. There is a facility called reactions. So reaction, we should know how to give the reactions. We need not open the mic many times. Okay. So what happened during the corona period? हमने क्या किया था? हमने ऑनलाइन क्लासेस लिया था. ऑनलाइन क्लासेस मतलब आप लाइव में है, स्टूडेंट लाइव में है, एंड यू टुक द क्लासेस. बट दैट इज नॉट इनफ. मेनी टाइम्स हम आपने भी नोटिस किया होगा, इंटरनेट का प्रॉब्लम है. अभी देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 कितने में 68 लोगों में से 7 लोगों ने कैमरा ऑन किया था. बाकी बेचारे खाना खा रहे होंगे कान में लगा के, चल रहे, लास्ट डे है, क्या फर्क पड़ता है, चलेगा. नो वाई. सो माय पॉइंट इज दैट ये प्रॉब्लम है. पीपल में से नो सर, अरे मैं कभी अभी हमेशा एक चीज सुनता रहता हूं, सर जब भी आप कहते हो ना, उसी दौरान मेरा माइक्रोफोन बंद हो गया, मेरा वेबकैम का चालू बंद हो गया, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है. ये मामूली सी बात है इस देश में. सो ओनली ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग इज नॉट द ओनली सोर्स. सो आपको और भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, जिसको हम इफेक्टिव तरीके से स्टूडेंट्स को समझा सकते. उसी सिलसिले में यूजीसी ने ये 8 थीम्स के बारे में एक ओरिएंटेशन किया था. इन दिस an 8 themes orientation, one of the important theme is ICT. So ICT matlab we are not going to teach what is a hardware, what is a software, what is MS Office. We expect that you should know the MS Office. So we should know how use the technology in teaching, learning, assessment, and pedagogy. That is the main approach I am using for this session. Okay. सर इसके बारे में जानकारी लेने से तो काफी हो जाएगा क्या? नहीं. Only theoretical understanding without practical exposure is a zero. Only theoretical understanding without practical exposure is zero. Only practical exposure, see, only theoretical understanding without practical exposure is zero. Only practical exposure without theoretical understanding is a big zero. So इससे मतलब क्या है? We must be knowing the theoretical understanding and practical implementation skill.
why I'm stressing this one very, very importantly, sir? Two reasons. If you do not deliver the class, teach innovatively, creatively, हमें लगता है अरे चलता है is not at all acceptable. उसका कारण है आप लोग इंक्लूडिंग मी, हम अपने बच्चों को ऐसे वैसे जगहों पर नहीं भेजेंगे So the question in this case is, sorry, there is an interruption over here. The question here is, आप है, हम है. Are we sending our children to a third class institution where no classes are going on? Teachers are relaxing. Teachers are saying that, अरे चलो यार बच्चा अपने आप पढ़ो. हमें तो तनख्वाह से मतलब है. No, we don't want to send. Because every parent wants to give the quality education to the learner, to their children. So how can we get into that quality education? If the teachers are updated, teachers are upgraded, and teachers are doing something creatively, innovatively, वही इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ रहे हैं. मुझे तो कंप्लीटली पता है. तो जब मैं ये बात कहता हूं तो लोग कहते हैं अरे नहीं सर, हमारे यहाँ ये मसले हैं, वो मसले हैं. मसले पहले भी थे सर, आगे भी रहेंगे. एक चीज ध्यान रखिएगा. तो वर्तमान में मसलों के साथ कैसे जीना, ये सीखना बहुत जरूरी है. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, मैं हमेशा एक बात बहुत फिक्र के साथ कहता हूं, मैं पैदाइशी हिंदी भाषी नहीं हूं, ना पैदाइशी अंग्रेजी भाषी. बाद में ये 7 भाषा मेरे मातृभाषा के अलावा सीखना पड़ा मुझे. ताकि मेरे क्यों सीखना पड़ा? Nobody is forcing me to speak in Hindi. Nobody is forcing me to speak in English. Because whatever the research I am doing, whatever the innovations I am doing, if I can use, I speak 7 languages. I read, write, and speak 7 languages. So that I can reach to the masses. पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में. So that I'm telling the people that yes, technology ko leke you can do a lot of change in the system, provided technology means people are thinking that big computer labs or smart board, smart way. No, teacher must be smart enough. सर एक चीज ध्यान रखिएगा, मुझे यहां से कोल्हापुर में हमारे बहन को फोन करना है. मेरा बहन रहती है कोल्हापुर में, माता महालक्ष्मी के मंदिर के बगल में रहते हैं, आसपास में मकान उनका. जब उनको फोन करने का, तो मैं क्या करना है, मुझे तो मेरे पास फोन होना चाहिए. वो मोबाइल फोन हो, लैंडलाइन हो, या विंडोज फोन हो, आईफोन हो, कोई फर्क नहीं मुझे. और मेरे फोन में नेटवर्क होना चाहिए, और मेरे बहन का नंबर मुझे आना चाहिए, पता होना चाहिए. और जब मैं फोन करता हूं, बहन के पास नेटवर्क होना चाहिए, फोन होना चाहिए, वो उठा के बात कर ले. दैट्स ऑल. So what is important here is the teacher. So how to make the teacher smart enough? What are the things? तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, when I started my teaching 33 years back, there is no power in the classroom, there is no PowerPoint.
मैं जिस अंदाज में आपके साथ बातचीत कर रहा हूं, द सेम वे आई टीच इन ए कन्वेंशनल क्लासरूम आल्सो. But one problem I started facing last 15 years. The problem is, number one, my classroom is 1 hour. मेरा एक क्लासरूम का ड्यूरेशन है, अवधि है 1 घंटे का. और 1 घंटे की क्लास में 10 से 15 मिनट जो है अटेंडेंस पे जा रहे हैं, अटेंडेंस लेने में जा रहे हैं. आई वॉज लेफ्ट विथ 45 मिनट्स ओनली. उसी 45 मिनट्स में मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूं. ये सबके साथ प्रॉब्लम है, आप मेरे लिए नहीं, अकेले नहीं, सबके साथ. और दूसरी बात है, मैं टेक्स्ट बुक को क्लास में पढ़ता नहीं हूं. पहले टेक्स्ट बुक को पहले पढ़ता हूं और मेरे क्लासरूम में बच्चों के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को लेके उसी बात को लेके चलता हूं. और मेरे क्लासरूम में 5 भाषा बोलने वाले बच्चे हैं. हिंदी कम आते कई लोगों को. मैं सारे भाषा बोलने की कोशिश करता हूं सो दैट मेरे जो वाणी जो है उन तक पहुंच पाए, मेरे भावनाओं को वो मिल पाए. तो इसलिए मेरे क्लास में सिर्फ 5 भाषा वाले हैं. सो मैं लेक्चर कम देता हूं, डिस्कशन करता हूं और टूल्स को डिमॉन्स्ट्रेट करता हूं और उनसे हैंड्स ऑन एक्टिविटी करवाता हूं. अब प्रॉब्लम कहां आ गई? 45 मिनट की क्लास में there are many things I could not able to complete during my class time. So what are the things I'm expected to complete? There are in the first level there are 3. I need to teach the basics first. Once they understand the basics, I can go for advanced level. Then after the advanced level, I can go for the application level. And this logic applies across the discipline: sciences, social sciences, humanities, engineering, medical, law, management. सभी में. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक्स पढ़ाते हैं. बेसिक्स उनको समझ में आने के बाद हम एडवांस लेवल पे जाते हैं. मैं आप सबसे एक आग्रह करता हूं, आप थोड़ा सा ये लिखने के कष्ट अपने अपने काम करते करते ये भी लिखने का कष्ट कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद डॉक्टर रफी को मुझे 10 क्वेश्चन देना है. मैं ये नहीं देता कि महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है और हमारे मुख्यमंत्री शिंदे साहब का पूरा नाम क्या है, मैंने नहीं मांगता. ओके. मेरा प्रश्न हमेशा आपके क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को टेस्ट करने का होता है. इसलिए जब मैं कुछ कहता हूं, आप सब लोग सुन लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा. बाद में मुझे ये मत कहना सर के तो सारे 10 प्रश्न में 0 आ गया. आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द नॉलेज लेवल क्वेश्चंस. My questions are application level, critical thinking level, testing the critical thinking ability, testing the analytical thinking ability. इसलिए while doing your work also, please listen and write down these points, very very important. So first level in my class, basic, advanced and application. Okay, let's assume that basics में कैसे पढ़ाता हूं मैं, आप भी ऐसे ही पढ़ाते होंगे. In the basics, I teach in 4 levels again. I'll try to see whether they understood the concept. I'll ensure that they will understood the idea. I'll ensure that they will understood the skill. They'll understood the task. Because some of the concepts which I'm explaining to my learners require conceptual understanding. Idea इनको समझ में आना चाहिए. What is the idea behind that? Some require skill, some require task. And all these things could not be complete within 45 minutes of the class. So पहले लेवल पे मैंने क्या बोला था? Basic, advanced, application.
In the second level, what I said, concept, idea, task, and skill. So all these things could not be completed within that 45 minutes. So what is the way? ये मैं 15 साल पहले सोचा था. और दूसरा एक और प्रॉब्लम है, मेरे क्लासरूम में, मेरे सब्जेक्ट में, some students are slow learners, some students are average learners, some students are gifted learners. So slow learners, I need a special provision for them. Average learners, उसके लिए भी कोई second system had to do. Same thing with the gifted learners also. These are the practical problems. Please try to understand. ये मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में प्रॉब्लम है ये. So as a teacher हमें सोचना है. So then I thought एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर देंगे so that वो सिस्टम को खड़ा करने के लिए मुझे अगेन 5 इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत है. मैं आपकी चैट बॉक्स में ये काम करता हूं. आपका शेयर स्क्रीन में व्हाइट बोर्ड को सेलेक्ट करूंगा, इसके अंदर कुछ चीजों को लिखने की कोशिश करता हूं अभी मैं. प्लीज कंफर्म, इज इट विजिबल टू यू ऑन द स्क्रीन्स? राहुल जी आ रहे, दिख रहे? ओके सर. तो फर्स्ट लेवल पे मैंने आपको क्या बोला था? बेसिक, एडवांस्ड, एप्लीकेशन. मतलब ये तीनों चीज जो है लेवल्स है. नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट, आइडिया, टास्क, स्किल. कॉन्सेप्ट, आइडिया, टास्क, स्किल. नाउ मेरे क्लासरूम में, जैसे आपको मैंने बताया तो स्लो लर्नर, एवरेज लर्नर, गिफ्टेड लर्नर्स आर देयर. So one of the another problem which I'm so then I thought a system which is the system flexible, adaptable. ये 100% ये प्रश्न आने वाला है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा. बाद में मुझे ये मत बताना कि सर आपने तो नहीं बताया, हम लिख नहीं पाए. द सिस्टम शुड बी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एडेप्टेबल होना चाहिए, पर्सनलाइज्ड, एंड शुड प्रोवाइड एंगेजिंग लर्निंग. आपका सिस्टम कैसे होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एडेप्टेबल होना चाहिए, पर्सनलाइज्ड होना चाहिए, और आल्सो सपोर्ट द एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस. ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही है. ओके. और ये सर यही काफी है? नो. एंड आप सबको पता है, आवर लर्नर्स आर, एवरी लर्नर्स learning style, learning pace, learning space, learning time,
is different. हर लर्नर के लर्निंग स्टाइल अलग है, लर्निंग पेस अलग है, लर्निंग स्पेस अलग है, लर्निंग टाइम अलग है. तो आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए? इट शुड बी फ्लेक्सिबल, एडेप्टेबल, personalized, and also supporting the learning engagement, learning experience. And हर लर्नर के लर्निंग स्टाइल को, लर्निंग पेस को, लर्निंग स्पेस को, लर्निंग टाइप को सपोर्ट करना चाहिए. Okay, so what is then another important thing, the next important, very there. So this is the first point, and this is the second point, and third point, supports the asynchronous learning environment. And fourth one is complementing to face-to-face synchronous mode of learning. या देखिए, मैंने कई सारे बातों को यहां आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं. फोर्थ पॉइंट क्या है? And it should be complementing to face-to-face synchronous mode of learning. What does it mean? We all of us are teaching a conventional classroom. So whatever the new system which we are going to set up, it should be complementing to the face-to-face synchronous mode of learning. Matlab, it's not a separate system. Please try to understand. And the last point is supports learner-centric approach, and it supports the learner-centric approach, and very importantly, experiential and supports the experiential learning environment. Okay, so what is important is, let me go back once again. So we are teaching in basic level of understanding, advanced level of understanding, and application level of understanding. And sub-levels is, we are explaining, while doing so, we are explaining the concept, we are giving an idea, task, and skill. So आप जो सिस्टम को जो खड़ा करना चाहते हो, बिकॉज मैंने आपको बताया था द प्रॉब्लम ऑफ दिस करंट सिस्टम, फेस टू फेस, we can't do many things in the face to face environment. So then we need to set up a environment. अब सिस्टम को टेक्नोलॉजी वाले सिस्टम, बिकॉज क्योंकि टेक्नोलॉजी इज द मोर वन which we have been talking about here. So what is important to me that
whatever the system you are going to set up, वो सिस्टम क्या होना चाहिए? इट शुड बी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, एडेप्टेबल होना चाहिए, पर्सनलाइज्ड होना चाहिए, एंड एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को देना चाहिए. एंड आप सबको पता है एवरी लर्नर्स, और इसके अलावा स्टूडेंट्स की लर्निंग स्टाइल को, लर्निंग पेस को, लर्निंग स्पेस को, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, मैं इसको जो कोट कर देता हूं, एंड लर्निंग पेस को एंड लर्निंग स्पेस एंड लर्निंग टाइम को सपोर्ट करना चाहिए. ओके, तो थैंक्स टू अस, हमारे सामने मूक्स है, इट्स बीइंग डूइंग ऑल दिस थिंग्स. ओके, ओनली कन्वेंशनल मोड ऑफ टीचिंग इज नॉट इनफ टू डू मेनी थिंग्स. और सबसे इंपॉर्टेंट एक और मैंने कहा था कि इट शुड सपोर्ट द एसिंक्रोनस लर्निंग एनवायरनमेंट. एवरीथिंग कैन नॉट बी सिंक्रोनस, लाइव में तो अर्थ पार नहीं होता है. और मैंने ये भी कहा था पॉइंट पॉइंट नंबर 4 में, इट्स कॉम्प्लीमेंटिंग टू द फेस टू फेस मोड ऑफ टीचिंग. हमारे फेस टू फेस मोड ऑफ टीचिंग को कैसे कॉम्प्लीमेंट करें. एंड लास्ट में, ये ऑनलाइन में हो या ऑफलाइन हो, टू थिंग्स आर कंपल्सरी. इट शुड बी लर्नर सेंट्रिक अप्रोच, not teacher centric, and very importantly supporting the experiential learning environment. तो आप लोग कहीं सोच रहे होंगे कि सर ये सारे हो जाता है. बिल्कुल होता है. what I am trying to say that we should know how to get the things done. so मैं आपके लिए तो फर्स्ट एक्टिविटी अभी दे रहा हूं, और इस एक्टिविटी का भी मार्क्स है. so I request all the participants to please take note of these activities. One of the important, the first activity which we are going to do it here is, I'm sharing my screen once again with you all. वो ये था, uh, so this is the one which I've been talking about. I request all the parties, this is the first activity I'm giving to you. People are telling that it's not opening, but if it is possible, then try to open it. And this is my link of the site. The link of the site is this, and I'm sharing in your chat box. This is the link of my site, and I request you to kindly open this one. So there is certain questions I'm going to ask you, which is connecting to this. Just tell me that if it is not opening, then we will be moving, proceeding further, because it is opening from my mobile phone. It's there on the system itself. If there is a problem, please let me know. So it's opening.
Did you able to open? Please say yes in the chat box. So glance this site from top to the bottom for next 3 minutes. अगले 3 मिनट तक इस साइट में तो जरा कई सारी चीजें हैं, उसको एक बार जरूर एक्सेस करने की कोशिश कर लीजिएगा. Okay. What is this site is being all about? मैंने जो आपके सामने जो साइट जो दिखा रहा था, what is this site is all about? This is again a teaching an environment, मैंने आपको पहले ही कहा था, which is supporting the which is flexible, adaptable, suiting the needs of the learner. This is one such environment which I have been using for the last almost 15 years. So the main purpose of this site is to support the learning of my learners beyond the classroom. Of course, इसके अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, बुक्स कोर्सेस का है और टीचिंग लर्निंग के ऊपर है. देयर आर so many things are there. एक ही बात नहीं, कई सारे बातों को इसके अंदर मैंने लिख रखा था. गाइडलाइंस है कई सारे. So if you want to create this kind of environment, अब सबसे इंपॉर्टेंट है कहां से शुरू करना है और कौन कौन सा टेक्निक अपनाना है. दैट इज इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड. और आपने एमएमसी का गाइडलाइंस देखा होगा एनईपी ओरिएंटेशन के ऊपर.
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो देखे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले में तो इतने सारे चीजों को आपको दे रखा है, सब थीम 1, सब थीम 2, लास्ट में ये भी लिख रखा है प्रैक्टिकल स्किल्स टू यूज द आईसीटी एंड टीचिंग एंड रिसर्च। ऑफ कोर्स मैं टीचिंग तक ही सीमित करूंगा। सो व्हाट आर द प्रैक्टिकल स्किल्स वी नीड टू लर्न टू एनेबल दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट? मैं शुरुआत वहां से करता हूं। प्रैक्टिकल स्किल का मतलब है, मेनी पीपल आर थिंकिंग दैट इट्स ओनली computer skills. No, computer skills are heck okay. And please confirm my screen is visible to you, please. Okay, very good. So what are the skills the teachers need to acquire? First of all, what is our requirement? To make the process of learning impactful, engaging, interesting, and challenging for the learner. To make the process of learning impactful, engaging, interesting, and challenging for the learner. What is the first and foremost skill? Okay, the first and foremost practical skill is try to acquire the competencies, capacity, capabilities of teaching and exposure to different modes of teaching. So, exposure to, ये first point, exposure to prevailing modes of teaching and learning. मतलब शुरुआत कहां से करना है? ओनली सर मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूं, बाकी जगहों पर पढ़ा नहीं पाऊंगा, मैं तो सिर्फ टेस्ट जो है ओनली क्लासरूम में लेता हूं, दूसरा मुझे नहीं आता है। ये जिसका सर्विस अभी कम से कम 5-10 साल है, वो ये नहीं कह सकते। तो हमें ये पता होना चाहिए, ऑफलाइन सिंक्रोनस हम सबको पता है, ऑनलाइन सिंक्रोनस को यूज कैसे करना है, ऑनलाइन एसिंक्रोनस को यूज कैसे करना है, और ब्लेंडेड को कैसे करना है। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्किल। सेकेंड, टीचर मस्ट बी गुड सब्जेक्ट एक्सपर्ट सर। Without the subject expertise, I think no teacher can survive. तो द क्वेश्चन क्या है सर, सब्जेक्ट एक्सपर्टीज के लिए हम कहाँ कोई रिफ्रेशर कोर्सेज करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं। बट रिफ्रेशर कोर्सेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स के अलावा आपके सामने ये ऑप्शंस अवेलेबल है। व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल? आपके सामने प्री रिकॉर्डेड ई कंटेंट, मतलब वीडियो हो, टेक्स्ट रिसोर्सेस, ऑडियो एंड इमेजेस आर अवेलेबल। इसको मैंने 4 भागों में बांटा था। फर्स्ट वन, डिजिटल इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन हायर एजुकेशन, digital initiatives of state government in higher education, digital initiatives of national oblique international institutions, and the last one is open educational resources. इतने ऑप्शंस है। और इसके अलावा डिजिटल एंड नॉन डिजिटल टेक्स्ट बुक्स एंड मटेरियल आर आल्सो अवेलेबल, क्योंकि डिजिटल मोड में सीखना आसान है। तो डिजिटल मोड में क्या क्या चीज, कई सारी चीजें हैं, बट कुछ चीजों को मैं समझाऊंगा ताकि प्रैक्टिकल भी हम करें। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डिजिटल इनिशिएटिव। इसका नाम है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा एक डीटीएच चैनल है, या एक छोटा सा वीडियो है, मैं वीडियो चलाना चाहता हूं। इसका वीडियो को एक बार सुन लीजिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम गोइंग टू रन दिस वीडियो, लिसन द वीडियो केयरफुली, confirm the voice is coming or not. Swayam Prabha, a direct-to-home or a DTH-based initiative, was launched about 7 years ago by the Ministry of Education, with the aim of reaching the unreached
and also to promote a self-learning, which is one of the goals of NEP, or the National Education Policy. Now, internet access or internet-based open educational content is out of reach for millions of users even today, simply because we are far away from the ideal 100%. Furthermore, what the issue is that high quality internet access is even a more privileged service today that's available to not many. So, in this regard, Swayamprabha fills a very, very important gap, because DTH, or television based technology, is a very well established one. If you look at the content of Swayamprabha today, we have thousands of hours of videos amounting to about hundreds of courses across 40 channels in many subjects, ranging from arts to science, from engineering to economics, from healthcare to skills, and so on. And the user has the facility, has the luxury of choosing a particular channel and a schedule upfront, because all of this is available on the portal. So the user can just go and search for the topic of interest and choose the particular day and the particular channel. Even more, we have the provision of archiving these videos for users who are unable to watch these videos for some reason, they have missed out and so on. So the archived videos on the portal allows the user to access videos after hours, and in fact these are available on YouTube as well. In order to equip Swayamprabha with interactivity measures, we have recently launched two initiatives. One is an SMS-based initiative, and other is a WhatsApp-based initiative. With the SMS-based service that we have, the user can actually search for a channel and schedule that's relevant to his or her topic of interest. And we have plans to empower this with artificial intelligence as well. The WhatsApp service is useful once you start viewing the content. So if you're already watching some of the channels, you must have noticed there is a scroll with a WhatsApp number. The SMS number is different from the WhatsApp number. So the WhatsApp service helps you raise a query, give us feedback, and give a rating to the content that you're watching. So if you have a technical query, we have a ticketing system to take this query all the way up to the teacher and get back the answer to the learner, hopefully within 24 to 48 hours, or the earliest possible time. Now going forward, what we plan to do is four new directions that we are envisaging. One is, of course, empowering the Swayamprabha services with artificial intelligence, of course. The way we plan to do it is have a chat bot on the portal, which will chat with the learner and ask relevant questions and guide the learner, help the learner navigate through the portal. That's the first thing that we have in mind. The second thing that we want to do is we want to use the latest language learning models to generate review questions at the end of the module and make them available to the user as he or she is watching, and also, of course, facilitate the availability of answers at a particular portal. And all of this can be done through a QR code. Even for the WhatsApp service that I mentioned earlier, there is a QR code facility available. The third thing that we have plans for in the immediate future is to have live sessions for every channel. Currently, we have live sessions for few of the channels, but for a lot of channels now, we plan to populate them with live sessions, so that you can dial in or you can send your message through WhatsApp or whatever service is available for the channel and send your queries, and the teacher will be able to answer your questions live. That's the third thing. And then the fourth one is, of course, you may be a user who has been learning in the regional language. So we want to equip these kind of learners with bridge courses or to provide content. Okay, I think you can listen other things later. So what is important to me? ठीक है, स्वयंप्रभा तो ये चैनल है, और यहाँ मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल एक्टिविटी देता हूँ. चलो, स्वयंप्रभा के बारे में हमें जानकारी मिल गई, ठीक है. मैं आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज देता हूं. वो एक्सरसाइज ये है, आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ाते हो, whatever the subject you want to teach, okay,
इसमें देखिए 5 प्रश्न मैंने पूछा था। फर्स्ट ऑफ ऑल योर सब्जेक्ट ऑब्लिक डोमेन एरिया, साइंसेस हो सकता है, सोशल साइंसेस हो सकता है, ह्यूमैनिटीज हो सकता है, इंजीनियरिंग हो सकता है, मेडिकल हो सकता है। अच्छा, आप ये बात बताइए कि यहाँ तो सबको नैक के बारे में पता है ना? नैक के बारे में पता है ना? कई लोगों ने हाथ भी नहीं, कुछ अपने काम कर रहे हैं। सर 37, सर नैक के बारे में पता है ना सर? 137, 37, 128, वेल वंडरफुल। सर नैक में मेरा मेरा चेहरा याद रखिएगा, नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा तो सब लोग हम यही पूछेंगे सवाल आप लोगों से। तो स्वयं प्रभा को अपने टीचिंग लर्निंग में इन्वॉल्व करते हो नहीं करते हो? यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा था। मैं आपको 10 मिनट का समय देता हूं। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू मी इज, ये बना दीजिएगा। आप अपने अपने कंप्यूटर में बनाना है आपको। आपका सब्जेक्ट एरिया क्या है? इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, जियोलॉजी है, यू कैन राइट डाउन द लास्ट कॉलम। आप यूजी में पढ़ा रहे हो, पीजी में पढ़ा रहे हो, रिसर्च में पढ़ा रहे हो, यू कैन राइट डाउन हियर। और लेवल ऑफ द रिसोर्स, आप अपने अपने सब्जेक्ट में करेंटली क्या पढ़ा रहे हो, कौन सा टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, उसका उसको निकाल के लिख लीजिएगा। यू कैन राइट डाउन समवेयर। ओके, तो स्वयं प्रभा में ढूंढो, स्वयं प्रभा में उसके रिलेटेड रिसोर्सेज कहां कहां अवेलेबल है, एंड आल्सो क्लासिफाई द रिसोर्सेज। बेसिक है, एडवांस मिला आपको, या एप्लीकेशन मिला? उसके बाद ये कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए काम आ रहा है, कोई स्किल एक्सप्लेन करने के लिए काम आ रहा है, ये कोई आइडिया एक्सप्लेन करने के लिए काम आ रहा है, या कोई टास्क एक्सप्लेन करने के लिए काम आ रहा है? राइट डाउन हियर। एंड द लास्ट पॉइंट इज, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज यू आर अडॉप्टिंग टू यूज? ये नैक की क्राइटेरिया में, कॉलेजेस और कॉलेजेस के क्राइटेरिया में, क्राइटेरिया 3, क्राइटेरिया 4 के अंदर आता है सर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी टीचर नीड टू अंडरस्टैंड। आपके लिए मैं 10 मिनट का समय दे रहा हूं, इसको करके इसका आउटपुट को आपके चैट बॉक्स में डालना है। मैं भी इसके जो स्वयं प्रभा के जो ये प्रैक्टिकल इसके टेबल को ना आपके चैट बॉक्स में कॉपी कर रहा हूं, ताकि आपको, इफ यू ओपन द चैट बॉक्स यू कैन सी द स्क्रीनशॉट। इफ यू ओपन दिस वन यू कैन सी द स्क्रीनशॉट इन योर चैट बॉक्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 10 मिनट। एज पर माई क्लॉक इट इज 2:58। ओके, 10 मिनट का मतलब 3:10। स्टार्ट। इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी।
If you have any specific question, please ask me. I am waiting for you. कोई डाउट नहीं है, कर लीजिएगा काम जल्दी. Somebody is asking a question, what about the sports training? So अभी आपके लिए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के कोई मैसेज इसके अंदर नहीं है, एंड यू ट्राई टू फाइंड आउट द मटेरियल, कहीं से भी ले सकते हो. स्वयं प्रभा में नहीं होता तो इससे मतलब थोड़ी है हम स्टॉप टीचिंग देम. There are so many options are available. From there you can able to teach. Okay. You are requested to put that, Rahul ji. You are requested to create a small table like this and put it there. ये आपको करके करना पड़ेगा.
Okay, so this is about the what I'm trying to say, the Swayam Prabha. There is another channel which is very popular. I request all the participants, please open this channel. Is EPG Pathshala. The another important channel is EPG Pathshala. इसका लिंक भी मैं आपके चैट बॉक्स में डाल रहा हूं. I'm very happy that at least 22 people have done it. Okay, I'm not happy that all of them are not done it. But there are some of the faculty members. I'm very happy to see that they are able to post the things. I think I'm very happy. So please open the EPG Pathshala. And EPG Pathshala, friends, just give me a minute, please. So I'm going to share it with you, the EPG Pathshala. So EPG Pathshala is a channel where you can get very good quality video and text information. Okay. So EPG Pathshala में भी EPG Pathshala में भी there is some interface. So we can see if you click on the student corner. अब देखिए EPG पाठशाला में इतने सारे कोर्सेस अवेलेबल है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 22 into 4 88 89 courses are available. And the question is, how can we access these courses? Okay, let me take computer science, my own discipline. If you click on the computer science, अब देखिए आपके सामने दो ऑप्शंस आ रहे हैं, पेपर और मॉड्यूल. पेपर और मॉड्यूल आ रहे हैं. तो मैं कंप्यूटर साइंस के ऊपर पहले क्लिक किया था. क्लिक करने के बाद पेपर आया, मॉड्यूल आया. मैं पेपर के ऊपर क्लिक किया. There are 17 papers are available. One of the paper is data structures. और इसके अंदर कितने मॉड्यूल्स लिखा है, ब्रैकेट में क्या लिख के आ रहे हैं, 40. अब इसमें भी 40 मॉड्यूल्स को मैं सर्च करना चाहता हूं. उसमें से एक मॉड्यूल मैं जो पढ़ा रहा हूं, इंट्रोडक्शन टू एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स. मैं जब इसको क्लिक करता हूं, देखिए क्या चीज आ रहा है. आई एम गेटिंग टेक्स्ट मटेरियल. 10 पेज का टेक्स्ट मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है. बट हमारे दोस्त कह रहे हैं कि सर ये तो इंग्लिश में है, हमें मराठी में चाहिए. जय महाराष्ट्र. तो कैसे मिलेगा मराठी में मटेरियल? मैं उसके लिए तरीका बताता हूं. अब देखिए ये टेक्स्ट मटेरियल अवेलेबल है. लर्न मोर में हमें मटेरियल मिलेगा, एक्सटेंडेड रीडिंग मटेरियल्स आर अवेलेबल. और उसके बाद वीडियो मटेरियल अवेलेबल. सो टेक्स्ट मटेरियल है, लर्न मोर है, ये सेल्फ लर्निंग. ओके, somebody raise the hand. सीरियल नंबर 5. बताइए क्या 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 सवाल है आपका. सीरियल नंबर 5. सीरियल नंबर 5 कौन है? चलिए, सो यहां तक आप कंप्लीट कर दीजिएगा. और यहां एक छोटा सा मैं एक्टिविटी आपको दे रहा हूं ईपीजी पाठशाला में. ईपीजी पाठशाला का देखिए, ये ईपीजी पाठशाला का प्रोजेक्ट वर्क है. ये ईपीजी पाठशाला का प्रोजेक्ट वर्क है. आप लोग जो है, और इसके ये जो हैंड्स ऑन एक्टिविटी भी आपको मैं
इसका स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं, आपके चैट बॉक्स में डालूंगा। ओके, इसके लिए मैं आपको 10 मिनट का समय दे रहा हूं। पहले आपको क्या करना है, आप कोई सब्जेक्ट को ढूंढ लीजिएगा, आप जो करंटली पढ़ा रहे हो उसका पेपर नेम लिख दीजिएगा, वो ईपीजी पाठशाला में जो आया। ये एक्चुअली आपके साथ साथ आपके बाकी फैकल्टी को भी ट्रेनिंग की जरूरत है मित्रों, बार बार ये बात मैं कह रहा हूं, सबको आना चाहिए ये चीज। ओके, उसके बाद आपको ये लिखना था, पेपर के बाद मॉड्यूल आपको लिख दीजिएगा और कौन से लेवल पे आप पढ़ा रहे हो, व्हाट लेवल यू आर टीचिंग, और जो मटेरियल आपको क्या मिल रहा है, बेसिक एडवांस एप्लीकेशन। उसके बाद लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको लास्ट ऑप्शन थोड़ी देर के बाद बता रहा हूं। आपको 10 मिनट का समय दे रहा हूं, 3:30 तक ये काम कंप्लीट करना चाहिए। प्लीज स्टार्ट डूइंग इट। ईपीजी पाठशाला में जाके आपको ये चीज करना है।
If you have any particular doubt, please ask me. What is important to me is the last point. We need to convert this one into the local language also. Please do it fast.
somebody is asking an interesting question that sir, isko how to convert into Marathi. वो मैं 10 मिनट में बताता हूँ. अभी थोड़ा चाय ले लेंगे जल्दी जल्दी. Okay, and we'll be back by, as per my clock, it is 3:40. और I'm not happy that everybody is not doing. बाकी सब लोग अपने अपने ते व्यस्त है. थोड़ा सा कर लो, बाकी लोग भी कर लीजिएगा और 10 मिनट में दोबारा मिलेंगे. Okay, and but I'm still there in the screen only. I'll just muted my microphone. मैं अभी screen में हूँ. Okay, afterwards I'll be showing you how to convert this text material into this thing, and then we'll be doing some learner centric activity. Okay, fine.
Okay, friends, welcome back. Please confirm my voice is reaching to you. So, one of the interesting things is अभी कई लोग मुझे कह रहे थे कि सर इसको कन्वर्ट कैसे कर. Now I'm going to show you an interesting site. इस साइट को लेके आप बहुत कुछ चीज कर सकते हो. उस साइट का नाम है, देखिए मैं आपको वो साइट दिखा रहा हूं. उस वेबसाइट का नाम है, एक बार मेरे कंफर्म कर लीजिएगा मेरे आवाज आप तक पहुंच पा रहे. प्लीज कंफर्म दैट योर रीच माय वॉइस इज रीचिंग यू, ऑल ऑफ यू. ओके, चलिए एक तो कंफर्म कर लिया 77 नंबर ने, बहुत अच्छी बात है सर. सो आई एम गोइंग टू शो यू वन सच साइट. ये जो इंग्लिश वाले कंटेंट को आप मराठी में ट्रांसलेट कर सकते हो, मराठी में ट्रांसलेट कर सकते हो. उसका साइट का एड्रेस मैंने आपके स्क्रीन पे लिख रखा हूं. मैं आप सबसे आग्रह करता हूं इस साइट को ओपन कर लीजिएगा, इस साइट को ओपन कर लीजिएगा. ओके, इस साइट को म्यूट कर लीजिएगा. ये जो है ये जो अनुवादिनी की जो सॉफ्टवेयर है, इस अनुवादिनी में देखिए कई सारी चीजें. वीडियो ट्रांसलेशन है, यूट्यूब वीडियोस इन भारतीय भाषा, भारत मैसेंजर है, और कई सारे चीज आपको यहां से मिलेंगे. और मैं सारे चीज अभी नहीं बता रहा हूं, बाद में आप इसको करने की कोशिश कर लीजिएगा. ओके, और इसको इसको बाद में आप ट्राई कर लीजिएगा. उसमें से एक चीज मैं बताने वाला हूं, टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन. और मुझे बता दीजिएगा थोड़ा सा, आप सबको मराठी पढ़ना आता है ना? प्लीज कंफर्म दैट आर यू कंफर्टेबल इन रीडिंग मराठी. ओके, सब लोगों को मराठी पढ़ना आता है. ग्रेट, जय महाराष्ट्र. तो अब इसको आपको मैं एक चीज मैं लिख के देता हूं, इसको कैसे किया जाता है. ओके, अब देखिए इसमें ना टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन वाले ऑप्शन में एक ऑप्शन है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन टूल. ऑनलाइन डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन टूल, इसमें यहां क्लिक करने के बाद आपको सिंपल लॉगिन करना है. लॉगिन करने के बाद जो डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करेंगे उसके भाषा इंग्लिश, और डेस्टिनेशन लैंग्वेज में आपसे मैं करा दूंगा. वो डेस्टिनेशन लैंग्वेज जो है मेरे लिए मराठी है. ओके, अब मैंने अभी एक फाइल डाउनलोड जो किया था, मैंने अभी एक फाइल डाउनलोड जो किया था, कोई भी एक करके देखता हूं. इसको हो जाता है क्या? देखिए एक छोटा सा मिनट टू मिनट प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम को मैं इंग्लिश में लिखा था मैंने, इसको मैं ट्रांसलेट करना चाहता हूं मराठी में. अब देखिए ये इंग्लिश से मराठी में ट्रांसलेट हो रही है. सबको मराठी पढ़ना आता है, तो इसलिए मैं आपको एक छोटा सा टेबल दिखा रहा हूं इधर, उसी टेबल मराठी में दिखा रहा हूं. तो मराठी में कौन पढ़ेंगे? मराठी में कौन पढ़ेंगे? ओके, so I think one person can unmute yourself and one person can unmute yourself and speak. आप नहीं पढ़ेंगे तो मैं पढ़ूंगा. मानरवांचे स्वागत. के श्रीनिवास, दीपा.
ओके, कार्यक्रम विषयार्थांची. Okay, I want you should speak. One person can unmute yourself and speak. May I? Yes. 119. Please speak, sir. 119. Please. Please read. चलिए मैं ही पढ़ता हूँ, मुझे थोड़ा बहुत तो आना आता है. मान्यवरांचे स्वागत. कार्यक्रमा विषयार्थी. नीपा वर्ल्ड. प्रमुख पाहुण्यांचे भाषण. प्रमुख पाहुण्यांचे भाषण. अध्यक्षांचे भाषण. आभार प्रदर्शन. राइट. मेरा मराठी इतना नहीं है. प्लीज अनम्यूट मी. I think how do I unmute you, sir? 1 minute, 1 minute, 1 minute. Sir, where is the procedure to unmute? Oh, 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute. Okay, sir, I unmuted Yes. 119. Yes, sir. Thank you, sir. So, can I read it into Marathi, sir? In Marathi में ही पढ़ने का सर. Yes, sir. Okay, thank you, sir. मिनिट टू मिनिट उद्घाटन सत्र 17 जानेवारी 2024. मान्यवरांचे स्वागत. के श्रीनिवास, NIEPA. कार्यक्रम विषयी कुमार सुरेश, NIPA. NIPA बद्दल सुधांशु भूषण. प्रमुख पाहुण्यांचे भाषण शशांक गोयल, IAS. MCHRDI चे महासंचालक आणि तेलंगणा सरकारचे मुख्य सचिव. प्रमुख पाहुण्यांचे भाषण बुरा व्यंकटेशम, IAS. शासनाचे प्रधान सचिव, उच्च शिक्षण विभाग आणि महाविद्यालयीन शिक्षण व तंत्र शिक्षण आयुक्त, तेलंगणा सरकार. अध्यक्षांचे भाषण शशिकला वंजारी, NIPA च्या कुलगुरू. आभार प्रदर्शन के श्रीनिवास, NIEPA. Right, Thank you, sir. sir. Sir, Yes. ठीक है. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Now, friends, I think this is the way you can convert it. अभी मैं आपको 10 मिनट्स का 10 मिनट का समय दे रहा हूँ. ओके, आप लोग भी इसी को इस तरीके से एक बार प्लान कर लीजिएगा. प्लान करके इसका आउटपुट को स्क्रीन की तरफ देना है. ओके, और ये आपको यही वेबसाइट है, और बाकी चीज भी 10 मिनट इसको एक्सेस कर लीजिएगा. मेरे घड़ी के हिसाब से 3:55 हुआ है. 10 मिनट का मतलब 4:15 तक. इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है. डिक्टेशन टूल है, लीगल ग्लॉसरी है, वॉइस को कर सकते हो, फाइल मर्जिंग कर सकते हो, कई सारी चीजें इसके अंदर है. और ये यूट्यूब एनालाइजर है, कई सारी चीजें. इसको 10-15 मिनट कम लगता है. इसको एक बार एक्सेस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. आपका जो टेक्स्ट है उसको कन्वर्ट करके उसका आउटकम इसके अंदर डालना है. कुछ फाइल, 2-3 पेज. डू इट.
Hope you are enjoying this tool. Hope you are enjoying this tool. This is a wonderful tool. I think you can able to use this tool very easily and comfortably. No login is required, Rupesh ji. It's an open access tool. You can try. You can use it.
Okay. I think we have enough time for do this one. Good, 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 good. I want to know what are the other tools others are using. I want to know what are the tools you people are using. Please mention over there. आपने कौन कौन सा टूल्स यूज किया था वो मेंशन करना जरूरी है. Okay. I want to know what are the tools you people are using it. I want the outcome to be written down. What are the options you people have explored? Please make it fast. I request the participants to please complete these activities quickly and do it.
I'm requesting the participants to make it fast, please. I'm happy to see that some of you are already done it. Voice translation, and only few people are saying. I want everybody. I'm giving you 10 more minutes extra time. ये वर्कशॉप में, ये सेशंस में आपको ये सारे स्किल्स सीखना है. ओके, इसको एक्सेस कर दीजिएगा. रुपेश भावस्कर ने कहा था अनंता, और 90 सीरियल नंबर 90 ने कहा था वीडियो ट्रांसलेशन एंड ऑल. बाकी सबको करना है, जल्दी कर लीजिएगा प्लीज, मेक इट फास्ट. मैं सबको मॉनिटर कर रहा हूं एक एक करके. सुशील डी पाटिल ने कहा था कि वॉइस ट्रांसलेशन एंड ऑल. जल्दी कर लीजिएगा प्लीज. कोणतरी विचारलं ना की तुम्ही कसं ट्रान्सलेट करा. डॉक्टर राजेंद्र, कुछ पूछना था क्या आपको? नहीं बाबा, नहीं पूछना है. एक ने कहा था मर्ज डॉक्यूमेंट्स भी मर्ज किया था लोगों ने. बहुत अच्छा.
there is one interesting question somebody is asking me, what about the translation accuracy, apps accuracy? सर आप खुद आप वसंत झंडे कैन यू टेल मी दैट आप एक आधा पेज का ट्रांसलेट करके देखो ना, यू योरसेल्फ टेल मी सर, यू योरसेल्फ टेल मी दैट व्हिच वन इज बेटर. ओके, आई थिंक फ्रेंड्स अभी आपको मैं लास्ट 4 मिनट्स का समय दे रहा हूं, and I request you to please complete this activity very fast so that we'll be moving to okay. The next important thing which we all of us needs to understand is the open educational resources. We call it as OERs. We call it as open educational resources. So what is OER? Try to understand what is this OER business is all about, and how can we able to use this OER thing, kind of a thing. Okay, and I'll be running a small video. First of all, this is the policy statement about the OER. The government of India is talking about the open educational resources, and of course उसको use भी करने की बात कह रहे. So इसमें ये भी दो तीन बातें कह रहे. एक तो है development of the OER, okay, and use of OER. Development is one part, use is another part. Open educational resources free. So what government is saying, that this can help reduce the cost of education, increase access to learning resources, and promote innovation and the collaboration. ठीक है. अब इसके बारे में what are the things we need to understand as a teacher? So देखिए, इसके अंदर कुछ बातें ऐसा है कि जो इसका लर्निंग आउटकम्स क्या क्या होना चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात इसमें ये है, कि इसके अंदर ये चीज है, अंडरस्टैंडिंग OER इज वन पॉइंट. ओके, अंडरस्टैंडिंग क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस एंड अदर थिंग्स, एंड कुछ हैंड्स ऑन एक्टिविटी भी आज आपसे मैं करवा दूंगा. अब देखिएगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ OER? Materials offered freely and openly to use and adapt for teaching, learning, development, and research. So much material is available there under OER. You can able to use it without any difficulty as such, starting from the content which is being available, and इसको use करने वाले students है, learners है, and the people with self-learners and many other people are going to use this material without any difficulty as such. Okay. अब let's try to understand. एक छोटा सा वीडियो अभी मैं चला दूंगा आपको. I request all the participants to listen to this video. But before listening to this video, please confirm that the voice of the video is coming or not. Have you ever wondered how to download and इसका voice share आ रहे digital नहीं आ रहे content confirm कर legally? लीजिएगा. How do you Okay, let yes in the people chat know box. that you want them to reuse your own work? Creative Commons licenses Okay. can help you do both. Listen We'll show carefully. you how. Our world's exploded with digital opportunities. Now we can communicate, share, and work together using the exceptional distribution network that is the internet. Information and content can fly between us in exciting new ways. But it's important to know that when something is created, say a photo, a document, or a music track, it's automatically protected by copyright. Copyright enables people to say who can share and reuse their creations. You must always obtain someone's permission before sharing or reusing their work, even when it's posted online. But what if a creator wants everyone to use their work, without the hassle of granting permission over and over? This is where Creative Commons can help.
Creative Commons provides licensing tools that are free to use. You can apply a license to your work, which refines your copyright and streamlines how you give permission. Zach here downloads a photo called CC Kiwi that he wants to use in his science project. He can do this without asking Kiri, the photographer, first, because she's already given permission with a Creative Commons license. Kiri's license is legally robust, but easy for Zach to understand. She's told the world, including Zach, that they can use CC Kiwi as long as they acknowledge her as the original photographer. There are more rules Kiri could have included. Creative Commons licenses are made up of license elements. You can think of them as rules, and each have their own special symbol. This is attribution. It means that Zach must acknowledge Kiri when he publishes his science project containing her photo. This is non-commercial. It means no one else but Kiri is permitted to make money from CC Kiwi. Tim wants to print the photo onto T-shirts and distribute them to friends. He can do this, but he must not sell them. This is no derivatives, and it means that Kiri hasn't given permission to change her photo. Kate can use CC Kiwi on her design blog, but will need to ask Kiri before retouching or mixing up the image. And this is share alike. It means new creations that use CC Kiwi need to carry the same license. Jack incorporates his own remix of CC Kiwi in his video installation, but he must share the work under the same terms that Kiri has. Each Creative Commons license gives permission to share and includes the attribution rule. So people who find your Creative Commons licensed work are automatically allowed to share it, but are required to acknowledge you if they do. The other three license elements are optional, and you can choose which ones to add, if any. Here are the 6 combinations that make up Creative Commons licenses. The difference between them is how many rules apply when someone wishes to use your work. The attribution license allows reusers the most freedom, and the attribution non-commercial no derivatives license allows the least freedom. The attribution license and the attribution share-alike licenses are sometimes referred to as free cultural works approved licenses. These 3 licenses restrict commercial use of a work, and these 2 licenses do not give permission for adapting or remixing. These 2 licenses require new works to be licensed under the same terms. To choose and apply one of these licenses and to view their terms in more detail, visit us at creativecommons.org.nz. Or you can answer some questions to help you decide which license best suits your needs at creativecommons.org/choose. There are some good ways to find other people's Creative Commons licensed work online. You can use a search filter by going to the Creative Commons website. Or why not try the Jamendo website for music, Flickr for images, or Digital NZ for New Zealand content. Using Creative Commons licenses could help your creations reach more people. Maybe you want to connect with others across the globe and take turns at improving a report. Or maybe you just want to have fun, remixing someone else's work. Whatever reason you have to share your work, you'll find there are scientists, educators, companies, and public agencies who are using Creative Commons. By opening up permission, just imagine how much we can achieve. Collaborating on what we hold in common, being open about big decisions, and finding solutions in the spaces between us. Let's work together, confidently and legally. It's good to share with Creative Commons. So now you understood about what is the Creative Commons is all about. So let's try to learn what are the skills to be understood, to be learned to use it. Now I'm going to show you one small map. I request you to take a screenshot of the screen map, very importantly. This map is very important. Okay, I request you to
I request you to kindly look into this one. This is very, very important. Okay. Now, I'm also giving you the process of entering the details over here. इसी को मैं आपको चैट बॉक्स में कॉपी करके डाल रहा हूं. ओके, ये आपके चैट बॉक्स में भी मैंने इसको डाल दिया था. एक बार कंफर्म कर लीजिएगा ये जो स्क्रीन आपके चैट बॉक्स में आ गया कि नहीं आया. प्लीज कंफर्म. This has already come. No, chat box I have copied. Chat box I have copied. Oh, okay. Now I think probably yes. Now you tell me. Is it coming? Has it come? Okay. Now there are certain things I'm going to explain to you. Yeah, good, ma'am. Thank you very much. What I'm going to say that what are the important skills to use the open educational resources? So first of all, you can see that, follow my mouse pointer. Open educational resources can be accessed through YouTube filter, Google Advanced Search and CC Search. ये तीनों चीज मैं आपको समझा दूंगा. I request you to kindly go through this material and you can use this. Okay, now what I'm going to say that how this will be useful. So what is first of all, I'm going to demonstrate how to use this YouTube filter. How to use the YouTube filter. अब देखिए मैं आपको YouTube filter के बारे में दिखाना चाहता हूँ. How to use the YouTube filter. YouTube filter को यूज करने के लिए स्टेप 1 openyoutube.com, क्योंकि YouTube filter YouTube में से क्रिएटिव कॉमन्स का कंटेंट को कैसे okay. So second point is in the search box. In the search box, enter the keywords. Okay, keywords is मुझे चाहिए computer programming, for example. So how to apply the filter? Sir देखिए, यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है आपको. Please confirm that. Can you see that there is a filter button over here? There is a filter button over here, please. Please confirm. Please confirm. Please confirm. There's a filter button over here. So click on filter. Click on filter. Once you click on the filter, यहाँ कई सारे चीज, अपलोडेड डेट के ऊपर फिल्टर लगा सकते हो, टाइप के ऊपर फिल्टर लगा सकते हो, ड्यूरेशन के ऊपर फिल्टर लगा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए 4 मिनट के नीचे. और फीचर्स, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ देखिए, फीचर्स वाले ऑप्शन में नीचे एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएटिव कॉमन्स. एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएटिव कॉमन्स. जब इसके ऊपर एक बार आप क्लिक करोगे, सर देखिए, क्रिएटिव कॉमन्स के ऊपर आप जब क्लिक करोगे, यू गॉट ये मैडम
So what I'm trying to say that so you can अभी देखिए ये तो वीडियो है. So this video is there. Now this video यहाँ देखिए वीडियो के ऊपर ओपन करके नीचे देखिएगा. देन इसके अंदर लाइसेंस इसके अंदर आ रहा है. क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूटेड लाइसेंस. ज्यादा पोषण ज्यादा देखभाल डव अब 20 ओके. ये तो क्रिएटिव कॉमन्स की वीडियो आ गए. ओके. दिस इज द वे द ऑप्शन कैन बी सर्च. ओके. इसको कर लीजिएगा. आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स. ये तो और बहुत कुशल कार्यकर्ता है. ऐसे नहीं है. ठीक है. ओके. प्लीज डू इट फ्रेंड्स.
Okay, the next step is, this is the way the videos can be searched. What is Google Advanced Search? What is the Google Advanced Search? देखिए मैंने आपको दिखाया ना Google Advanced Search का कैसे करना है. अब Google Advanced Search को कैसे करना है? Google Advanced Search के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपली आपको लिखना पड़ेगा Google Advanced Search. देखिए, ओके, आपको लिखना पड़ेगा Google Advanced Search. गूगल एडवांस सर्च के बाद लिखने के बाद आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा? देखिए एडवांस सर्च के करके लिख के आ रहा है इधर. मान लीजिए मुझे फ्लिप्ड एक टेबल यहाँ आ जाएगा. इस टेबल में मुझे मान लीजिए फ्लिप्ड लर्निंग के ऊपर सर्च करना है, और इसमें इस लैंग्वेज में एनी लैंग्वेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. आ, आपको पर्टिकुलर लैंग्वेज भी चाहिए तो पर्टिकुलर लैंग्वेज कर सकते हैं. फिलहाल तो मुझे में एनी लैंग्वेज. सबसे इंपॉर्टेंट मेरा आखिरी प्रॉब्लम में मैंने लिखा था कि उसके अंदर यूसेज राइट्स में सामने लिख के आ रहे हैं नॉट फिल्टर्ड बाय लाइसेंस. इसको मैं लिख दूंगा फ्री टू यूज. ओके, इसके अंदर 5 ऑप्शंस आएंगे. फ्री टू यूज और शेयर, फ्री टू यूज शेयर इवन कमर्शियली, फ्री टू यूज शेयर और मॉडिफाई, फ्री टू यूज शेयर मॉडिफाई इवन कमर्शियली. फ्री टू यूज और शेयर, इसके ऊपर मैं क्लिक करके करता हूं. अब देखिएगा इतने सारे, अब देखिए मेरे पास इतना आ रहा है. स्प्रिंजर ओपन में एक आर्टिकल है, अच्छा सा आर्टिकल. ठीक है, ये आर्टिकल मैं यूज करना चाहता हूं. मैं इस आर्टिकल को डाउनलोड करूंगा. देखिए इस आर्टिकल को मैंने डाउनलोड किया था. मैं इसको लिख दूंगा फ्लिप लर्निंग. डेस्कटॉप पे मैंने कर दिया जी. अब मैं क्या करूंगा? फ्लिप लर्निंग डाउनलोड कर दिया. अब उसके बाद क्या करूंगा? अनुवादिनी में जाऊंगा. अनुवादिनी में जाके ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन टूल ओपन करूंगा, लॉगिन करूंगा. लॉगिन करने के बाद और डेस्टिनेशन लैंग्वेज मराठी में इसको कन्वर्ट कर देता हूं. डेस्कटॉप में ट्रांसलेट. अब ये 20 पेज तक आराम से इसके अंदर ट्रांसलेशन हो जाएगा. देखिए क्या हो रहा है. अगले 9 मिनट के अंदर अंदर आपको ये सारे चीज करना है. अब देखिए ये मैं मराठी में ट्रांसलेट कर रहा हूं. पहले क्या किया मैंने? स्टेप नंबर 1, गूगल एडवांस सर्च ढूंढा. टेबल पे सबसे ऊपर जो मैं कीवर्ड्स जो डालना था डाल दिया. सबसे लास्ट में जाके मैंने इसको फ्री टू यूज एंड शेयर पे क्लिक किया. कई सारे आर्टिकल्स आ गए. ये देखिएगा, ये देखिए स्प्रिंगर ओपन के आर्टिकल आपके सामने आ रहे हैं. स्प्रिंगर ओपन के डाटा आगे ही नहीं आए. आपको दिख पा रहे हैं ये सारे चीज स्क्रीन पे? तो आप उस आर्टिकल को डाउनलोड करना है. डाउनलोड करके अनुवादिनी में जाके इसको ट्रांसलेट करना है. अगले 9 मिनट तक आपको ये प्रैक्टिस करना है. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. प्लीज डू इट फास्ट. जल्दी कर लीजिएगा प्लीज.
So please update quickly. आगे बाकी लास्ट में 3 मिनट बचा है. I request you to please update what is the status of this. Okay, I think at this point of time, friends, so I'll stop saying this. But before I conclude, what is important as far the NEP 2020 is concerned? So there are certain specific things, skills the teacher needs to understand before we can proceed further. What I'm trying to say that if these things we could able to learn, things can happen much more easily and comfortably. Our life will be much easier, so the teacher can provide the very valuable information. That's all, friends, I wish to say. And thank you very much for Dr. Rafe for providing me this opportunity to interact with you. And आप सबके सहयोग भी मुझे अच्छा लगा था. और कई लोगों ने मुझे अच्छा दो चीजों में अच्छा लगा. कई लोगों ने काम किया था, कई लोगों ने काम नहीं किया था. बट उन लोगों के लिए मैं हमेशा ये बताता हूं, आप जब टीचिंग में रहना चाहते हो विद क्वालिटी, ऑल दिस थिंग्स नीड टू बी लर्न. एंड जहां भी जब भी आपके पास समय है, इसको सीखने की कोशिश कर लीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार. I'll stop my session. Thank you. I too enjoyed your session, sir.
काय बोला ना आपण करा ना तो बंद नहीं कर सकते क्योंकि कल जो चार्जिंग को लगा पहले फोन में कितनी चार्जिंग? लूज हो गया बंद होएगा कार्यक्रम चालू है बंद नहीं करना